So welcome back. This is lecture 3 of PGBP and this is for CMA Intermediate June 2022 attempt AY 2022-23. ठीक है, तो ये हमारा PGBP का लेक्चर 3 है. हम कंटिन्यू करेंगे जहां हमने स्टॉप किए थे. we are seeing the definition of we are seeing incomes chargeable under PGBP, that is section 28, which is the charging section of PGBP. ठीक है, तो हमने कुछ पॉइंट्स कर लिए थे and we were in this point. Okay, amount received or receivable for certain agreement. So we said that these are some negative agreements where you are saying that you don't do it, and so I'll give you this much money. Okay, that were these two, and there were exceptions, 2 exceptions for this negative things. Okay, your negative agreements. There are 2 exceptions. One is when you get money from UN, okay, Montreal Protocol. This is when you agree not to use certain chemicals or things, okay, which is harmful to the ozone layer. But if you stop using it, then you have to use something else, some other product. It can be costly. There's a cost involved, right? If you're stopping something. So for that, if UN gives compensation, then it is not taxable. That's the first thing. Second is, these are some right to manufacture which is taxable under capital gains. Okay, so we'll see when we go to the capital gains chapter, there we will see which are the rights to manufacture which are taxable under the head capital gains. Okay, so if it is expressly mentioned that that is taxable under capital gains, it will not be taxable here. So generally what is seen is to distinguish if a source of income, generally I think source of income permanently comes to an end. Okay, if it's permanently comes to an end, then it is taxable as capital gains. Okay, but here if some part has come to an end, your business is still functioning. Okay, business is still functioning, but only for some part you have stopped or something. Okay, in that case it is business income. Business is still functioning, then business income. This is the general thing which is used by courts to interpret this. Okay, so specifically what is taxable under capital gains, right to manufacture. Okay, and its details we'll see in capital gains chapter. Just general thing I told you, that if a source completely comes to an end permanently, okay, the business comes to an end, and then it is capital gains. Okay, if you have got 5 sources of income, one comes to an end, but other businesses are going on, then that will be taxable as business income, considered as part of business. ठीक है. Next is Keyman Insurance Policy. Keyman Insurance Policy के मैंने आपको सैलरीज में भी बताया था. ठीक है, तो ये वाली बात, ये पॉइंट समझ में आया. हिंदी में भी बताया मैंने कि जो कुछ राइट टू मैन्युफैक्चर होते हैं, राइट्स होते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग, वो टैक्सेबल होते हैं कैपिटल गेन्स में. ठीक है, तो कैपिटल गेन्स में हम देखेंगे इसको डिटेल में. ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है कि क्या देख के आप डिसाइड करते हो कि पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन्स में. वही मैंने बताया था कि परमानेंटली अगर एंड हो गया आपका सोर्स ऑफ इनकम और बिजनेस भी एंड हो गया तो कैपिटल गेन्स होता है. लेकिन सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम खत्म हुआ है, बिजनेस चल रहा है, ओके, तब वो पीजीबीपी माना जाता है. कोर्ट्स ऐसे इंटरप्रेट करते हैं इसको. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सारे कोर्ट केसेस देखेंगे तो एवरीवेयर यू विल फाइंड द सेम इंटरप्रिटेशन. ऐसा नहीं है. ओके, द टॉपिक गेट्स डेवलप्ड स्लोली. ओके, ठीक है. नेक्स्ट इज कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी. तो ये मैंने आपको बताया था पहले कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज देयर इन सैलरीज आल्सो, बिकॉज there is a businessman and his employee. ठीक है, and there is an insurance here. ठीक है, मान लीजिए he is taken in Keyman Insurance. Keyman Insurance ये होता है कि ये is a very important employee. ठीक है,
इज अ, मान लीजिए ये कीमैन इंश्योरेंस है, ये बिजनेसमैन है, एम्प्लॉई है, ओके, इज अ वेरी क्रिटिकल एम्प्लॉय। तो से अगर वो बीमार पड़ गया 3 महीने, तो एम्प्लॉयर को 5 करोड़ का लॉस हो जाएगा। इज सो क्रिटिकल, is so critical that if he becomes sick, doesn't work for 3 months, employer will lose a huge sum, say in crores. So in that case, he takes out a Keyman insurance policy. Okay, so say he has taken a Keyman insurance policy of 5 crores. Okay, so and if he really becomes sick, okay, then what happens is under this Keyman insurance, okay, he will also get something, he will also get something. Okay, whatever he gets, it will be taxable as salaries, because he is getting as a cover for his salary income, right? He's sick, he's not able to earn, and he's getting that. So his income is like that of a salary income. Okay, and he's getting this income because he is in employment with this businessman. So which is why it is salary income for the employee. But what about the businessman? He is getting this 5 lakhs to cover for his profit. ठीक है, बिजनेसमैन को मिल रहा है उसका प्रॉफिट को कवर करने के लिए, तो वो पीजीबीपी हो जाता है। इसीलिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में बस ये याद रखना है कि ये मिलता है। और अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ पे तो एम्प्लॉय है, कोई ऐसा है जो एजेंट है, हु इज नॉट इज एम्प्लॉय, उसके लिए भी उसने कीमैन इंश्योरेंस लिया है, बिकॉज दैट एजेंट इज की टू हिम। तो वो एजेंसी का उसका क्या रहेगा, व्हाट हेड में टैक्सेबल होगा? हाँ, Please repeat. what? Sir, please repeat question. My question is that here here is an employer who is a businessman. One is your employee. Okay, so if from the Keyman insurance, if he gets some money, the businessman, it will be business. Sir, other sources, income from other sources. Correct. So it will be good. नेहा, कैसे पीजीबीपी होगा? इसके लिए बोल रहा हूं, ये एजेंट के लिए, ये तो एजेंट है ना उसका। अब ये एजेंट भी उसकी बिजनेस के लिए क्रिटिकल है, इसीलिए उसके नाम पे उसने इंश्योरेंस लिया है। अब अगर ये एजेंट को कुछ मिल रहा है, सपोज इसका यहाँ जैसे एम्प्लॉय को मिला था ना, मान लीजिए इंश्योरेंस के अंडर में एजेंट को भी कुछ मिलता है। ओके, अगर एजेंट को कुछ मिल रहा है तो अब उसका और इसका एम्प्लॉयर रिलेशन नहीं है, इसलिए हम उसको सैलरी नहीं बोल सकते। ओके, करेक्ट। तो इसीलिए इट विल बी पीजीबी, सॉरी, इट विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एक कीमैन इंश्योरेंस अलग अलग लोगों, तीन अलग अलग हेड में टैक्सेबल हो सकता है। ओके, वन कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी टैक्सेबल इन डिफरेंट हेड्स। कन्वर्शन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट्स, इसमें क्या होता है, मेनी बिजनेस हाउसेस डू दैट। ठीक है, दे कन्वर्ट द स्टॉक, स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट। ठीक है, इसका एग्जांपल ये है कि मैं फर्नीचर बेचने का बिजनेस करता हूँ। ओके, आई बाय 100 फर्नीचर खरीदता हूँ और बेचता हूँ, दिस इज माय बिजनेस। ओके, सो फर्नीचर इज माय स्टॉक, करेक्ट। ठीक है, बट अभी मेरा ऑफिस है यहाँ पे, ठीक है, आई हैव एन ऑफिस ऑल्सो। अब मेरे को एक फर्नीचर चाहिए था, मेरे को, तो यहीं से एक फर्नीचर निकाला और मैंने मेरे ऑफिस में रख दिया, इन माय ऑफिस। So what I have done actually is I have converted stock in trade to capital assets, capital asset. ठीक है, समझ में आया ना सबको कि क्या क्या हो रहा है करके? तो यहाँ पे बेसिकली ये फर्नीचर मेरा काम है खरीद बेच का। So this is my stock in trade. This I purchase and sell furniture. So this furniture is my stock in trade. Okay, but I needed one furniture in my office, so I've taken, because I already have a stock. Okay, instead of buying from outside, what I'll do is I'll take one from here and I'll keep it in my office here. This is called conversion of stock into capital asset. Okay, and for taxability, what is done is you will have to see the market value of this stock, fair market value of this stock. Okay, on the date when you are converting it to
capital asset. Say if the FMV fair market value is 5,000, then it is considered as if, you know, as if the value of conversion, or you have sold this stock, it is, the transaction is seen like this. Okay, you have sold this stock for 5,000. Okay, and then you have purchased this for 5,000, this capital asset for 5,000. It is seen like that. ठीक है, इसका टैक्सेबिलिटी वी विल सी हाउ इट इज डन, आगे आएगा हमको यही चैप्टर में. ठीक है, तो जो लॉ ये देखता है कि ये बोलता है कि ऑन कन्वर्शन, कन्वर्शन हो गया नहीं बोलता है, लॉ सीज इट एट्स टू ट्रांजैक्शंस. फर्नीचर को आपने बेच दिया कितने में, 5,000 में, which is its fair market value as of today. Okay, you have sold furniture for 5,000. That will be one transaction for it. Second transaction for it is you have purchased another furniture for 5,000. This is how it will see it. ठीक है, ये हो गया कन्वर्ट. तो अब ये उल्टा भी हो सकता है, करेक्ट. मैं फर्नीचर का बिजनेस करता हूं, ठीक है, इसको यहाँ ला लेते हैं. आई एम डूइंग फर्नीचर बिजनेस. ओके, इन माय ऑफिस देयर इज अ फर्नीचर, आई डोंट वांट, मैं इसको कुछ, आई वांट टू रिनोवेट माय ऑफिस, so I already have a stock of furniture which I am selling. ठीक है, so then I'm just putting this here. ठीक है, इसको भी बेच देंगे इसके साथ साथ. This becomes conversion of capital asset into stock in trade. ठीक है, so in PGBP जो है हम देखेंगे, आप स्टॉक को बेचते हैं तो PGBP होता है ना. If you sell stock, it is PGBP. If you sell a capital asset, it will be capital gains. ठीक है, so in the first case when you converted stock into capital asset, मैंने बोला था ऐसा फर्स्ट देखा जाता है, you have sold stock at market value, correct. So this part is taxable as business income. बस इतना याद रखना है, ठीक है. डिटेल्ड इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ कन्वर्शन of both capital asset into stock in trade and vice versa, we will see it with problem. हम देखेंगे कि कैसे वो होता है करके, अभी concept wise देखना है. Okay, so conversion of stock into capital asset is whatever income arises is business income. Okay, so right now we are seeing from a concept point of view. Okay, we'll be going deeper and deeper as and how we proceed. Last is recovery of certain capital assets covered under section 35 AD. So we'll see section 35 AD में उनको पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में इसके deductions. So what happens is you get 100% deduction in this. Okay, so in under this section, just remember you get 100% deduction. So if you are getting 100% deduction, okay, and then you are selling it or something, and you are getting you are recovering say 20, ठीक है, you have got 100% deduction, ठीक है, full deduction मिल गया आपको, ठीक है, फिर आपने इसको बेच दी and you are getting 20 rupees. Okay, so this recovery is taxable under business income. So whatever recovery you get up to the extent of deduction is taxable as business income. ये भी अभी है, इसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. ये अभी सेक्शन 35 ये सब आएगा आगे, ठीक है. एट दिस स्टेज वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल अबाउट ऑल दिस, ठीक है. ये सारे अलग अलग हमारे सेक्शंस रहेंगे. 35 को भी करने को विल नीड 2 लेक्चर्स सेपरेटली. ओके, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ PGBP, ठीक है. ये आपको इसको आप रेजिडुअल बोल सकते हैं. पॉइंट 1 इटसेल्फ इज रेजिडुअल. ओके, so now next is how to compute PGBP income. Okay, so we had discussed earlier also, ठीक है, हमने कोई टेस्ट में भी मैंने पूछा था आपको for house property. Okay, so this week I'm planning to take your salaries test, so you can start preparing from now only, ठीक है. So I think most probably I'll tell you the dates, but it won't be before Friday. Okay, so you can just start preparing for your salaries test. Okay, so very soon, within the next 7-8 days will be your test on salaries. Okay, and keep giving all tests. It will help you a lot. Anybody who is giving tests regularly, उनको बहुत फायदा होगा, ठीक है. और आपके लॉ के भी टेस्ट्स आएंगे अभी अगले वीक में, ठीक है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू पोस्ट द रिवीजन वीडियो फर्स्ट,
और फिर आपको लॉ का टेस्ट देना है, ऐसा सोच रहा हूँ. ओके, सो लॉ टेस्ट्स विल फॉलो वेरी सून. Okay, so first test now, next one will be salaries. Okay, so here हमने ये देखा था कि PGBP and IOS. ठीक है, मैं बोल रहा था आपको 3 and 5. Okay, 1 2 3 4 5. 1 is salaries, 2 is house property, 3 is PGBP, 4 is capital gains, 5 is IOS. Correct. So 3 and 5. ठीक है, it's computed as per SSC's method of accounting. Okay, right? This is just a repeat of that point. कहीं assessing officer can do somewhere, he can make a best judgment assessment. So he will make assessment based on his best judgment, not on the complete data which the SSC is providing. Okay, when he believes that accounts are not correct or complete or have not followed accounting standards. ठीक है, it's only in these two cases that he will make best judgment assessment. Okay, ठीक है. और नेगेटिव इनकम मतलब भाई इनकम इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम. ठीक है, जैसे हम we know that profit को, for profit he will say 50 is the profit, that is plus 50. ठीक है, if there is say another expense of minus 60, expense of 60, then that 50 will become minus 10, right? Okay, so negative income is loss. ये तो हमको मालूम ही है as per general knowledge. Okay, income includes negative income. Now notional profit is not considered. So notional profit is like sole proprietor salary, ये तो notional expense हो गया. Okay, notional profit is also similar. Like if I say कि I have transferred something worth 1,000 to me for 1,200. I have transferred something worth 1,000 मेरे कोई to me for 1,200. Okay, so that is not considered. That's a notional transaction, है ना. मैं अपने आप को कैसे बेच सकता हूँ? So notional profit is not considered. Anticipated profit and all, that is which you have not got but you may get in future, that's also not considered. Okay, nothing, no anticipated notional, that is not considered. Legality Sir. of business as per PGBP, it doesn't matter. ठीक है, आप कैसे भी कमाओ, हमको उससे कोई मतलब नहीं. If you have got income, first give us tax. जो आपने जो इलीगल रास्ता अपनाया है उसके लिए जनरल लॉ में केस चलेगा. So whatever illegally you have earned, first you give us the tax. Okay, and as per general law there will be a separate case only, okay, for your illegal activity. So for Sir. PGBP, yeah, just a moment. For PGBP, it doesn't matter whether the business is legal or illegal. Yes, Himanshu. So salary given to sole proprietor is not taxable, considered as a notional profit. What? जो थर्ड पॉइंट है ना notional profit का, हाँ, सोल प्रोप्राइटर सैलरी. अगर कोई प्रोप्राइटरशिप है, कोई सिंगल इंडिविजुअल का बिजनेस है और वो अपनी बिजनेस इनकम में से या अपने थोड़ी सी इनकम को एज ए सैलरी कंसीडर कर लेता है, तो उस इनकम को नोशनल इनकम मानते हुए टैक्स फ्री कर देते हैं क्या? नहीं, टैक्स फ्री उसको कंसिडर ही नहीं करते. मतलब सोल प्रोप्राइटर का भी वही ट्रीटमेंट होगा जो हमने पार्टनरशिप फॉर्म में की. ठीक है, उसका जो प्रॉफिट है उसी की आइडेंटिटी रहेगी. विल ओनली सी हिज प्रॉफिट, और जो अपना सैलरी बोलता है, जो भी बोलता है, दैट विल बी एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. ये सोल प्रोप्राइटरशिप का जो प्रॉफिट है, दैट विल कंसिडर. इसको आगे वो कुछ भी नाम दे, अगर ये सेज कि मैं इसमें से 40% दुकान में ही रखता हूँ और इसका 40% मैं घर में बेचता हूँ, उससे हमको कोई मतलब नहीं. 40% he might send home, 30% he might keep in the shop itself, then he might do something for promotion. उससे हमको कोई लेना देना नहीं. Profit जो आ गया उसको, whatever profit he has got here, okay, that will be taxable. So इसीलिए salary is not considered. So if he tries to write salary to reduce his profit, salary अगर लिखेगा तो his profit will be reduced, right? So वो allowable नहीं.
So salary expense will not be allowable in P&L account. That will be allowable in P&L appropriation account. Come again. Salary expense, if he wants to charge in as a expense in P&L account, that it will not be allowed. Salary Yes, expense yes. for him So will basically, be allowed in appropriation. if you are paying salary to an outsider, only then it will be allowed. If you are saying you are paying salary to yourself, then it will be treated as a notional profit or notional transaction. Paying salary is basically not an income but an expense, right? So it will be considered as notional transaction and won't be allowed. If you are paying salary to any other employee, third person, that is allowed. Okay. Okay. So okay, so legality or illegality का कोई मतलब नहीं है. Okay, doesn't matter whether it's legal or illegal business. It is a compilation of all income of all business or profession. Okay, so I might have 5-6 different businesses. So you have to compile the profit of all, and then it will be taxable as business income. Okay, it's a compilation of income of all business or profession. Okay. And then business, last point is business or profession must be carried on during the previous year. Business आपका चला होना चाहिए, ठीक है, भले ही एक दिन चला हो, but business must be carried on during the previous year, at least some part of the previous year. Okay, these are the main points regarding taxability of business income. Okay, now, regarding this point 7, okay, where we are saying that it should be carried on during the previous year. Iske there are some exceptions. Sir, in the last point, at least some part of the previous year. So what some part signifies? Means Even it one may day. be 10 days. Even one day. Even one. Even Okay. one day. Okay. So now exception to point 7, जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, it should be carried out during the previous year. In these cases, it is not necessary that business should be carried on during the previous year. Okay. So one is your discontinued business. Okay. So if I have discontinued my business today, okay, so certain things from my business I'll receive in future periods also, right? आज मैंने बिजनेस बंद कर दिया तो मेरे को सारे इनकम आज नहीं मिल जाएंगे, जो मेरे पेंडिंग होंगे. There'll be some receivables and all that. Okay, it's possible that I get it in next year or next to next year when the business is no longer there. Okay, so in that case it is taxable as PGBP or discontinued business. Okay, point 7 will not hold good for discontinued business. Okay, and these are all, you know, something related to this only, discontinued business. Here is, but these are some other things. ये यहाँ पे सीधा हम बोल रहे हैं कि if you're getting any revenue out of a discontinued business, it will be chargeable to tax. Here, in this point, recovery of any amount earlier allowed as deduction. You see, if you have taken a deduction of say 60%, okay, and saying that this is bad debts or something, but something happened, you have received now that amount. Okay, so now that amount should be chargeable to tax, correct? तो जो डिडक्शन आपने लिए हो उससे आपका इनकम डिडक्ट हो गया ना, उससे डिडक्शन से, इट वाज योर ट्रीटेड एज योर एक्सपेंस. नाउ दैट यू आर गेटिंग इट बैक, ठीक है, अगर रिकवरी हो गया, आप सोच रहे थे कि नहीं होगा, बट नाउ you have been able to recover it. You thought you will not get it back, okay, but you have got it now. So in that case, it is taxable as PGBP. So this recovery, during this recovery, whether the business is there or not there, okay, that is not seen. Okay, next is see, balancing charge is a specific case. Again, like we will study it in detail, and that too, I would say 4 or 5 lectures from now हम balancing charge करेंगे. So इसमें बस इतना होता है. Okay, just remember that balancing charge is taxable as PGBP. जब हम balancing charge में आएंगे ना, I will just bring you back, क्योंकि मैं अभी अगर
इसके पीछे बात करने गया था 10-15 मिनट इसमें वेस्ट हो जाएंगे. ओके, एंड वी आर गोइंग टू डू दिस सेपरेटली. जस्ट रिमेंबर बैलेंसिंग चार्ज वर्ड इज यूज्ड ओनली फॉर पावर सेक्टर यूनिट. ओके, सो मैं जब आपको बैलेंसिंग चार्ज कराऊंगा, दैट टू एज आई एम सेइंग हम बहुत जल्दी करेंगे, वेरी सून. ओके, आई विल जस्ट ब्रिंग यू बैक, यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको. ठीक है, दिस इज टैक्सेबल एज पीजीबीपी जो आया है ना, दिस पॉइंट जो है मैं आपको बता दूंगा. मैं नोट डाउन कर लेता हूँ यहीं पे. ओके, okay, I'll just say show later here, so I'll remember. So anyways, I'll remember when I show you balancing charge, I'll show you what it is. So उसमें always एक class का discussion होगा. Okay, and then so you will understand what balancing charge is. अभी उसके ऊपर मैं अगर थोड़ा भी बात करूंगा तो it's a time waste. Okay, so the second next is sale of asset used for scientific research. Again here in scientific research you get 100% deduction. This is also a case of 100% deduction. ये भी हम देखेंगे. All these are important points which will come. So इसमें you have got 100% deduction. आपने deduction तो ले लिया और फिर आपने बेच दी. Then you have sold that asset. Okay. So whatever amount you have received in selling it, that part will be taxable as PGBP, not as capital gains, because आपने deduction लिया है already PGBP. Okay. It is taxable as PGBP. साइंटिफिक रिसर्च. तो ये सब चीजें हैं ना, इसका यू डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, ये सब इंडिपेंडेंटली डिटेल में है. ओके, यहाँ पे सिर्फ इट इज जस्ट एक सिनॉप्सिस जैसा है. ओके, देन ये है बैड डेट रिकवरी इज सिमिलर टू दिस रिकवरी. करेक्ट, बैड डेट रिकवरी भी इसके जैसा रिकवरी है. तो सेम लॉजिक. ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एकदम सेम है. इट इज जस्ट रिकवरी. आपने पहले डिडक्शन ले लिए हैं, फिर वो अमाउंट मिल गया आपको जो आप सोच रहे थे नहीं मिलेगा. यू थॉट दैट यू विल नॉट गेट इट, बट यू हैव गॉट इट नाउ. ओके, सो व्हाट यू हैव गॉट इट नाउ, दैट विल बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी. ठीक है, एंड दिस इज these are certain reserves. ठीक है, ये भी हमको आगे आएगा. ओके, व्हाट इसका ये होता है कि इफ यू पुट अ सर्टेन अमाउंट इन दिस रिजर्व, ठीक है, इफ यू पुट अ सर्टेन अमाउंट इन दिस रिजर्व, ठीक है, आपको उसका डिडक्शन मिल जाता है. Okay, if you put a certain amount, say you put, you're getting a deduction of 25%. Okay, on putting amount in this reserve. ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे आगे. ये सब चीजें डिटेल में है, तो इसलिए ठीक है अभी रिपीट हो जाएगा मैं अगर और आपको इसमें अगर 10-15 मिनट्स डालूंगा तो. ओके, इसलिए मैं आपको सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूँ, दैट्स ऑल. ओके, ये सब चीजें ऑलरेडी है. जो नहीं है, ऑफ कोर्स दैट फॉर दैट वी विल गिव मोर टाइम. ओके, तो इसमें क्या होगा, क्या होता है ना, दिस एक स्पेसिफिक सेक्शन है व्हिच सेज कि इफ यू पुट सो एंड सो अमाउंट इन अ रिजर्व, एक रिजर्व है उसमें डालोगे तो विल गिव यू डिडक्शन ऑफ 25%. यू हैव पुट दैट अमाउंट एंड यू हैव टेकन डिडक्शन, और फिर बाद में आपने वो अमाउंट निकाल लिए, तो कंडीशन वाज यू कीप दैट अमाउंट इन दैट रिजर्व, वी विल गिव यू डिडक्शन, एंड वी गिव यू डिडक्शन. आफ्टर टेकिंग डिडक्शन, इफ यू टेक दैट अमाउंट आउट, देन समझ रहे हैं ना. ओके, सो तो अगर हम निकाल लिए तो देन इट शुड बी टैक्सेबल अगेन. करेक्ट, जो डिडक्शन हमने दिया था इट शुड बी टैक्सेबल अगेन. सो ये है वो बात, दैट इज द थिंग. तो ये जो 5 चीज पॉइंट्स आपने देखे हैं, आपका बिजनेस है नहीं है, ये चीज हो रही है तो इट विल बी टैक्सेबल. ओके, वेदर योर बिजनेस इज existing or not, it will be taxable. Okay, एक मिनट. So ये है, this is about our PGBP, profits and gains of business or profession. ठीक है, so most important head, और इवन गवर्नमेंट का भी सबसे ज्यादा ध्यान इसी पे रहता है कि पैसे इसी में से आते हैं. This is the most critical head. Okay, from a revenue point of view, from any other point of view. Okay, so for a even good student of direct taxation is judged on how well he knows PGBP. Okay, so chaliye, now next we will see incomes not taxable under the head PGBP. ठीक है, some of this जो हमने पहले से ही देख चुके हैं, we have already seen
rent from house property, we have seen that even if his business is on letting properties on rent, but he's getting rent rate, if he's getting rent, it is taxable under house property. We had seen there already. Okay. So अगर property, even if his property is held as stock in trade में है, but उस बीच में उसने उसको रेंट में दे दिया कि चलो जब तक बिकता है कुछ आने दो पैसे करके. Okay, that rental income. So even if it is stock in trade and he has given it on rent for some time, for the time being, whatever rent money he gets, that will be house property. Okay. If you are using the rental capacity of a property and getting rent, okay, if you're getting that word rent, okay, it will always be taxable as house property. And we know that if letting is incidental to business, that is, you have let out, you have built something for your workers and all, okay, incidental to business, so that if they stay close by, it will be easy for your work. In that case, that rent will be PGBP. Okay. This point 1 already has been discussed in income from house property. Okay. Now there are certain things. So यहाँ पे हम जो है ना, we are seeing a negative list. These income are not taxable under PGBP. कम वॉट में, ठीक है. ये एक नेगेटिव लिस्ट हम देख रहे हैं. Dividend on shares, always income from other sources. Okay. Winning from lotteries, races, crossword puzzles, always income from house, income from other sources. Now in dividend on shares, okay, it is income from other sources even if he is a stockbroker or dealer. Okay. Anything dividend on shares, always IOS. Okay. Okay, so now exception is here interest on securities. Dividend on shares is always IOS. Okay, but interest on securities held as stock in trade. So securities are stock in trade and you are getting interest, that is chargeable to taxes PGBP. Just remember this. Okay, normal interest on securities is other source, income from other sources. Okay, but if your securities are held as stock in trade, you are getting interest, then PGBP, but dividend in any case, okay, is IOS. Then winnings from lotteries, crossword puzzles and all that, races, is IOS. Okay. Exception here given is winning on an unsold lottery ticket. That is, I am a lottery dealer. ठीक है, मेरे पास बहुत सारे lottery tickets मैं बेचता हूँ. 1, 2, okay, 3, 4. There are many lottery tickets which I have. Okay, I've sold many. So whatever I could sell, I've sold out. ठीक है, तो मैंने ये वाला बेच दिया. Okay, so I have sold this out. ठीक है, I have sold this out. अब 3 बच गए मेरे पास. ठीक है, तो आज रह गए, चलो कल बेचूंगा करके मैंने ये 3 रख लिया. So I've sold the red cross जो जहाँ से डाला, I've sold these out. 3 is remaining, so I've kept it. I'll sell it tomorrow. It's my stock in trade. Okay, but then when I got up next morning, I saw that in this one, in this particular ticket, I have earned 5 lakhs. In this particular ticket, actually, I have earned 5 lakhs as lottery income, lottery prize money. Okay. So now this is my, so in this case, this prize money will be taxable as PGBP, winning on unsold lottery ticket. Got it? ठीक है. और फिर next is ये सब, these are all exempted incomes. ठीक है. So this is section 10. Section 10 is all kinds of exemptions, you know, right? Incomes exempt from tax. Okay. Or this is income exempt for societies, trust, and this is income exempt for political parties.
So basically ये सब जो in the end exempted income है. If any income is exempted by virtue of any particular section, that will not be taxable. ये तो हमको मालूम ही है, right? Based on common sense, we know that if it is an exempted income, it will not be taxable. Why in PGBP? Not in any head. ठीक है? Okay. Some taxable under capital gains for the purpose of 28 VA. Okay. तो इस 28 VA जो है ना, ये बेसिकली इस टाइप का इसमें डील करता है. ओके, जैसे आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूट परमिट दिया है. ओके, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, कम्स अंडर 28 VA. ठीक है, तो अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली. देयर इज सम इसमें 28 VA पे जो है ना, देयर बीन लॉट्स ऑफ कोर्ट केसेस हुआ है इस पे कि ये इनकम जो है वेदर इट विल बी कैपिटल गेन्स में होगा या बिजनेस इनकम में होगा. ओके, तो हाँ, बेसिकली यस, इट इज नॉन कम्पीट फीस के ऊपर ये होता है एक्चुअली. नॉन कम्पीट फीस के ना, आप जैसे हमने ऊपर जो देखे थे ना, वो रेनॉल्ड्स रोटोमैक का एग्जांपल मैंने दिया था आपको, राइट? सो दैट इज कॉल्ड नॉन कम्पीट फीस. द 28 VA डील्स विथ ऑल काइंड्स ऑफ non-compete fees. Okay, so वैसी एक है रूट परमिट. यू हैव गॉट रूट परमिट. ठीक है, अगर कोई बोल रहा है कि you have one route permit, other one has 3-4 route permits. ठीक है, he is asking you to sell it for some money. ठीक है, तो it comes under a non-compete transaction. So अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम कंप्लीटली खत्म हो गया, आपके पास एक ही रूट परमिट था, ओके, कंप्लीटली सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, देन जो भी वो आपको कंपेंसेशन दे रहा है, that will go to capital gains. What I'm saying is, in this route permit, say you have one, other person has 3-4. He is saying, okay, you give to me only, I'll give you compensation. So when I'm giving it to him, my source of income is completely extinguished. So it will be capital gains. Okay, this non-compete fees has been a case of many litigations. Lots of litigations have been done, and it has been defined that what should be taxable under capital gains and what under PGBP. So it is when it was said that if the business is still in existence, okay, then it will be business income. But if the business is not in existence, then it will be capital gains. Okay? So 28 VA is basically non-compete fees के लिए होता है. It is for non-compete fees. Okay, then हमने ये देखा कि what is not allowed as deduction, right? ऊपर. ओके, एक काम करते हैं, वो टाइम हो गया अभी हमारा. यू कैन ज्वाइन बैक एट 1:10, सॉरी 1:30 प्लीज. ओके, 1:30 सेम लिंक.